So Manoj will start rapid fire, which is quite famous in our Let's Talk business, which doesn't require you to think too much. Immediately you have to answer the questions I'll ask you. Okay. So the first is, what's the best and worst advice you have ever got? It's not necessary you must have followed the worst advice, but it makes you laugh whenever you look back. It can be during your career time. It can be during your entrepreneurship journey. So initial days there was no advice. हम सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कोई मेंटर होता नहीं था, हमें तो मेंटर वर्ड नहीं समझता था. तो देयर वाज नो एडवाइस. जो भी किया है कर करके किया है. आप अगर आज पूछ रहे हो कि व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस टुडे, पीपल जस्ट सिंपली से बी हेल्दी. ओके. एंड वर्स्ट एडवाइस? वर्स्ट एडवाइस इज कि पैसा बनाओ. पैसा बनता नहीं है. ट्रू. So if not real estate, and आप बोल नहीं सकते IT because you have that background, which industry would you have ventured into? It's very funny, but I'll tell you, मुझे तो मंदिर है ना वो वाला बिजनेस करना था. What business? हमारे देश में सबसे बड़ा धंधा क्या है? Like Religion. पर आप क्या करते हैं? Priest बनते हैं? No, you know कृष्ण भगवान के मंदिर ISKCON. That is the business I want to do. Okay, I got the drift. Because you said not to think. So what's the one skill every aspiring entrepreneur should master? How to research and learn. Okay. Which real estate trend do you think will dominate in the next 5 years? What do you mean? मतलब आपको कौन सा एक ट्रेंड लगता है या कौन सा एक पर्टिकुलर सेक्टर लगता है which will dominate the next 5 years? Agriculture. Okay. A book that has inspired you the most and you have to tell us why. Rich Dad Poor Dad inspired me in a very opposite direction. In what direction? पूरी दुनिया को रिच डैड पुअर डैड ने वो कहानी सिखाई है कि पैसा वाला पैसे कैसे बनाता है, गरीब गरीब कैसे रह जाता है और वो घर नहीं खरीदना. माय फादर वाज पुअर. तो वो जो ऐसा नहीं था कि मेरे फादर पुअर थे तो मैं पैसा नहीं बना पाया. मैंने बहुत पैसा बनाया बिकॉज वो संस्कार और जो बेसिक उन्होंने चीजें सिखा दी थी इसीलिए बनाए. तो इफ आई एम सीन इनटू माय सेगमेंट की ऑनेस्ट क्यों है तो वो इसीलिए. मे बी मैं रिच डैड से आता तो फिर मैं वही कर रहा होता जो बाकी लोग कर रहे हो. मैं वो नहीं कर पाता जो मैं पोस्ट करने लगा हूँ. True. So if you could have dinner with any entrepreneur or real estate business leader, it can be dead or alive, who would it be and why? नारायण मूर्ति. और रिसेंटली उन्होंने जो बोला ना 18 घंटे काम करो, आई एम डेड फॉर हिम. यही करना है यही यंग जनरेशन को करना ही पड़ेगा. आप नहीं करोगे तो वही होगा जो यूरोप के साथ हो रहा है. रिसेशन आ रहा है. इंडिया में रिसेशन इसलिए नहीं आया है क्योंकि हम लोग पुराने लोग काम करते थे. I agree. Yeah, true. Describe Micromitti in one word. Wealth creation. If you had to choose a life motto, what would it be? Enjoy करो, then there has to be no regrets. आज जी लो, कल का मत सोचो. Nice. What's the most exciting part of your day as a founder? सवेरे उठ के फोन लगाना चालू कर देता हूँ मैं. मेरा माइंड एक्टिव हो जाता है. ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑफिस खुला या नहीं खुला टिल टुडे. सबसे पहला टेंशन ऑफिस खुला के नहीं हो, सबको पकड़ के लाओ कौन कहाँ पर है. So what are the 4 words you would describe when you're hiring certain team for Micromitti? Leadership quality, working together, and how you can make people learn and how you can learn from them. And how would you describe your leadership style? Be human. Okay. है ना, God has given you lot of things. जो दे दिया वो भी बहुत है. And be human. सबका अपना अपना strength है. If you had to describe your journey with Micromitti in a single sentence, what would it be? Very passionate. Very passionate. Very passionate. Nice. So thank you so much, Manoj, for coming today on Let's Talk Business. It was lovely to have you here and know about Micromitti. I'm sure more of our viewers, even industry leaders, will understand how Tier 3 is not the hurdle, as you said, and how there are a lot of opportunities in Tier 2 cities. Yeah, thank you, Kratika. And I would really appreciate and I really hope there are more people who give voice to Tier 2, Tier 3 city, not just me. I believe there are a lot of good entrepreneurs, people who want to do. They do not have that kind of exposure which Tier 1 people have. So there can be that kind of bonding and connect. It is good for country, it is good for jobs, it's good for everybody and anybody. So very, very thank you and really appreciate you welcoming us here. Thank you so much.